Hello, friends. Welcome back to our channel. Now, today we are here to give you some detail about file system. What is this file system? दोस्तों आज हम लोग आपके साथ है कुछ फाइल सिस्टम के बारे में बात करने के लिए बट ये जानकारी देने के पहले ही बता देती हूँ ये फाइल आप लोगों को लगता है कि फ़ाइल के बारे में आप लोग जानते हैं लेकिन इस फाइल को कैसे स्टोर करते हैं कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है ये डिटेल जानने के लिए ऑब्वियसली आपको ये वीडियो फॉलो करना ही पड़ेगा और इस वीडियो को कभी भी स्किप मत कर जाइए नहीं तो आपको बहुत से ज्ञान मिस हो जाएंगे. Don't skip this video, otherwise you can't able to follow it totally. You may know the term file, but what is that? How can you structure it? How can you manage it? How can you retrieve it? Or how can I store it? This detail we can able to get from this lesson. So, go through it thoroughly and take the lesson. First of all, the name is coming file. What is this file? We should know about this. The file is nothing but collection of related information that is recorded on secondary storage such as magnetic disk, magnetic tape or optional disk. एक्चुअली ये फाइल क्या है ये एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है. ये हम लोग कहीं भी कुछ भी डेटा ले रहे हैं उसको सही पे सेव कर लेना कोई भी मैग्नेटिक टेप में हो या कोई भी स्टोरेज डिवाइस में हो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में हो उसी को हम लोग कह रहे हैं फाइल. अब कंप्यूटर के लैंग्वेज में है तो इसको सीक्वेंस ऑफ बीट्स बाइट्स लाइन्स रिकॉर्ड्स ये सारी चीज़ों में ही बांटेंगे. सो दीज आर द वे वी say what is file. Obviously file create कौन कर सकता है यूज़र ही करेंगे. So the file system we can say that a collection of information and it will be stored in any type of storage area. Now you can ask me that the source file produced procedures and the functions, how can we get it? This detail we will tell you right now. अब इस फाइल की डिटेल तो हम लोगों को थोड़ा बहुत पता चल गया है कि ये फाइल क्या है. वे फाइल को स्ट्रक्चर कैसे कहें. The file structure should be according to the required format of operating systems understand. That means किस तरीके से इस फाइल को हैंडल करेंगे ये पूरी जानकारी डिटेल सब कुछ ही निर्भर करता है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम प्रोग्रामिंग के ऊपर. अब इस फाइल सिस्टम को क्या क्या कर सकते हैं हम लोग. देखिए कोई भी फाइल आपके पास स्टोर हो या कुछ भी है उसको किस हिसाब से आप स्ट्रक्चर्ड करेंगे. पहला एक हो सकता है इसका कौन सा टाइप का फाइल है उसको एक जगह में रखते. ये हो सकता है कि कैरेक्टर जैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इनटू द लाइन उस हिसाब से रखें. फंक्शन एंड प्रोसीड्यूर्स के हिसाब से रखें. बाइट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू ब्लॉक और अंडरस्टैंड बाय मशीन ऑब्जेक्ट फाइल्स उस सीक्वेंस में रखें. या ऑपरेटिंग सिस्टम डिफाइन करे डिफरेंट फाइल स्ट्रक्चर को क्या कोड के अनुसार हो या सपोर्ट कैसे कर रहे हैं उस हिसाब से हो. So the file structure you can say that it may be maintained in such a way that source file sequence procedures and the functions wise or its character organized wise or according to the file types or the bit or procedures wise or what way the object file of the sequence bytes required by the operating system. Now according to that there are several types of file we can able to get. Now this file types is referred to the ability of the operating system to distinguish different types of files such as text files, source files, binary files, etc. Many operating systems supports many types of files. Now here we will discuss
were the files supported by MS-DOS, Unix or such type of operating systems. अब देखिए फाइल टाइप के मतलब क्या है. हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ एबिलिटी रहता है, उस हिसाब से वो लोग फाइल को डिस्टिंक्ट करते हैं डिफरेंट टाइप में. जैसे कोई टेक्स्ट फाइल हो गए, कोई सोर्स फाइल हो गए, कोई बाइनरी फाइल हो गए, एट्सेट्रा. अब इसको कौन सा मेमोरी में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इसको मेंटेन करे, कौन सा सपोर्ट करे, उस हिसाब से इसको कैटेगराइज किया जाता है. अब हम लोग यहाँ पे MS-DOS, यूनिक्स, दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से ऑपरेटिंग फाइल को हैंडल करते हैं, टाइप के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वही हम लोग देखेंगे. फर्स्ट वन टाइप्स इज कमिंग ऑर्डिनरी फाइल, नेक्स्ट डायरेक्टरी फाइल एंड थर्ड वन विल कम स्पेशल फाइल. ये सारे हमारे फाइलों के टाइप्स गए. अब फाइल एक्सेस करने के लिए मैकेनिज्म भी कुछ चाहिए. फाइल एक्सेसिंग मैकेनिज्म रेफर द मैनर which records the file may be accessed. There are several ways to access the file: sequential access, direct or random access, index और sequential address. अब ये सारी चीज़ें है क्या, एक्चुअली किस हाल से, किस हिसाब से हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये अब हम लोगों को जानना चाहिए. ये जो हम लोग सीक्वेंशियल फाइल बता रहे हैं और सीक्वेंशियल एक्सेस, ये सीक्वेंशियल एक्सेस एक्चुअली है क्या? एक्चुअली द सीक्वेंशियल एक्सेस इज दैट which the records the accessed in some sequence, that is, information in file is processed in the order one record after another. The access method is the most primitive one. अब ये सीक्वेंशियल एक्सेस क्या है? सीक्वेंशियल एक्सेस मैं पहले ही बता रही हूँ, एक के बाद एक आएंगे, जहाँ पे हम लोगों का एक्सेसिंग मेथड प्रीमिटिव, मतलब कोई भी हम लोगों का प्रायोरिटी बेस्ड नहीं होगा. नाउ द डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस, इट विल टेल यू द रैंडम एक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड session or provide the record directly. Which one we need, that we will write down. And the last one, index sequential, it will follow the mechanism to build up the sequential access. Index is created at first and there we will get. Now according to that, there is the space allocation will be there. अब ये इस हिसाब से स्पेस एलोकेशन भी होता है फाइलों के. फाइल एलोकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से लेते हैं, उस हिसाब से हम स्पेस एक्सेस को 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. एक है कंटिग्यूअस एलोकेशन, linked allocation and indexed allocation. Now you can ask me that what type of space allocation. File are allocated disk space by operating system. Now the operating system deploy the different way. These are the disk space files. These are known as contiguous allocation, linked allocation and indexed allocation. Now what is this contiguous allocation? Actually, each file occupies contiguous address space on hard disk. This assigned disk address is a linear order. It's easy to implement. The external fragmentation is the major issue of this type of allocation technique. Now the next one is coming, linked allocation. Linked allocation will tell each file carries a list of links on the disk blocks. Now the direction or the directory contains the link and pointer of the first block of the file. No external fragmentations is there and effectively use the sequential access file. The inefficient in case of the direct access file will be treated as linked allocation. Last one, that is the linked indexed allocation. Obviously by the name you can able to get that it is the solution of all previous contiguous and linked allocation. It is an index blocks is created having all the pointer to the files. Each file has its own index block which stored the address of the disk.
and the disk spaces occupied by the file. So you can able to get, it will minimize the all solution. And obviously the directory contains the address of the index blocks of this file. That means you can able to get that it will solve the previous problems. अब हम लोगों को बताना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें, ये जो स्पेस एलोकेशन हमने बताए वो क्या है. स्पेस एलोकेशन ये है कि हम लोग किस तरीके से इस स्पेस को एलोकेट कर रहे हैं बाय यूजिंग द मेमोरी. यहाँ पे यही सारे चीज़ों को देखने के लिए हम लोग जो स्पेस एलोकेट करते हैं उसको 3 तरीके से करते हैं: कंटिग्यूअस, लिंक्ड एंड इंडेक्स्ड. कंटिग्यूअस में क्या होता है, कोई भी फाइल कंटिग्यूअस एड्रेस स्पेस के अनुसार चलते हैं. यहाँ पे कोई असाइंड इंडेक्स ब्लॉक रखा हुआ है, उसी को लीनियर ऑर्डर में फॉलो करते हुए जाएंगे. ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो इजी है, लेकिन एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन इसमें आ जाते हैं, क्योंकि कोई छोटा साइज़ का फाइल हो और बड़ा सा एलोकेशन हो तो उसमें मेमोरी स्पेस का प्रॉब्लम रह जाते हैं. अब दूसरे वाला लिंक्ड. लिंक्ड में क्या हो रहा है, देखिए लिंक्ड में हम लोग एक पॉइंटर को पहले वाले को लिंक करके रख दिए. अब उसके बाद पीछे सारे ब्लॉक्स आते जा रहे हैं फाइल के. उसमें भी कोई छोटा बड़ा, इसमें सीक्वेंशियल एक्सेस होते जा रहा है. इसमें डायरेक्ट एड्रेसिंग का प्रॉब्लम हो रहा है. ये भी एक प्रॉब्लम है. अब दूसरा प्रॉब्लम क्या है, दूसरा प्रॉब्लम ये है, देखिए स्क्रीन में भी इस सारे चीज़ें जो मैं बता रही हूँ वो पॉइंट वाइज यहाँ पे दिया हुआ है. तीसरे में इंडेक्स में क्या होगा, इंडेक्स में ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, क्योंकि एक ब्लॉक में हम लोग सिर्फ इंडेक्स का पॉइंटर्स और फाइल्स के रख देंगे, उस हिसाब से उसको एड्रेस कर रहे हैं. तो इंडेक्स ब्लॉक्स के साथ ही हम लोग इसका स्टोरेज चेंजेस होते जा रहे हैं. सो इस वजह से ये हम लोगों का मोर हेल्पफुल हो रहा है. So from this name, and you can follow the screen here also. Here also what I told you, that is telling that what is the contiguous allocation and what's their efficiency and disefficiency. In case of contiguous, it is very easy to implement, but there is something that is the external fragmentations occur. This is the major issue. That's why this type of allocation technique we are not trying to follow. The next one will come. Before that, I want to tell you one thing. Up to this level, if you think this video gives you some knowledge, if you have any problem or doubt, then also give your comments. We will try our level best to solve that. आप लोगों को ये जो वीडियोस में मैं दिखा रही हूँ, मैंने पहले ही कह रही हूँ कि कैसे कंटिग्यूअस एलोकेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, लिंक्ड एलोकेशन में प्रॉब्लम हो रहा है. देखिए यहाँ पे वीडियोस में भी वो चल रहा है स्क्रीन पे, आप पॉज करके भी वो सारे पॉइंट्स को पढ़ भी सकते हैं. लेकिन एक चीज़ आपको बता देना ज़रूरी है, अगर आपको लगे कि ये वीडियोज़ हेल्पफुल है आपके लिए तो, और इसमें कोई प्रॉब्लम भी हो रहा है, तो ज़रूर हम लोगों को कमेंट कीजिए. हम लोग बैठे ही हैं आपके कमेंट लेके उसको सॉल्व करने की चेष्टा में. तो अगर आपको मिले तो ज़रूर कीजिए. Now the thing is coming, the linked allocation. Here the linked allocation, by the name you can able to get. Here no external fragmentation will come, but they're also inefficient in case of direct address file, because एक को हम लोग पॉइंट करके रख दिए and उसी को ही लेके चल रहे हैं. One will be pointed and therefore it will be linked to the first pointer block to another file that way. This is the linked, so that is also inefficient. पहला वाला हमारे इनएफिशिएंट था, उसका एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आ रहा था. दूसरे वाला मतलब लिंक्ड ये है कि लिंक के बाद लिंक चल रहा है, तो इनएफिशिएंट हम डायरेक्ट एक्सेस फाइल, हमें चाहिए एक फाइल तो उसको डायरेक्ट ला के नहीं सकते, पहले वाले को पॉइंट करो, वो धीरे जाएंगे, मतलब ये मीडिएटर लेके चल रहा है. अब इस सारे को सोल्यूशन करने वाला कौन है, इंडेक्स फाइल. इट इज़ द सोल्यूशन of contiguous and linked allocation. Here, all the index block is created having all pointers files, and each file
has its own index block, which store in the address of the disk place occupied by the file. मतलब हमारे कुछ भी हो, एक पॉइंटर रहते हैं, उसमें डिफरेंट इंडेक्स रह जाते हैं फाइलों के, एक पॉइंटर ब्लॉक में और इंडेक्स ब्लॉक में। आप उस हिसाब से डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं। इसमें ना एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन के डर है और ना ही एक के बाद एक फाइल नहीं ले सकते डायरेक्टली, ये प्रॉब्लम है। सो ये हेल्पफुल है। यहाँ डायरेक्टरी कंटेंट्स द एड्रेस ऑफ इंडेक्स बॉक्स फाइल, मतलब ये तो फाइल लेके बैठा नहीं है, फाइल का सिर्फ इंडेक्स लेके बैठे हैं। इस वजह से ये डायरेक्टरी भी हम लोगों का हेल्पफुल हो रहा है। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो I think I can able to create little bit idea about your all other related things. If you think it is helpful for you, then nothing to say. If you have any doubt, just give us comment. And if you think that it helps you, then don't forget to like and share our video. And also don't forget to subscribe our channel, because that is the way we can able to communicate to each other. We will be closer. So after this level, today's lecture, next we will come very soon. Thank you for listening today's lecture. Thank you.